हरे हरे राम हरे राम राम राम। ओके। तो जो लोग अभी अभी ज्वाइन किए हैं, प्लीज राइट योर नेम इन द चैट. आई विल टेक इट एज एन अटेंडेंस. ओके, सो विल स्टार्ट टुडेज सेशन. You're all able to hear and see me clearly, right? Okay. Okay, everybody is present here. कुमार भाई। Anurag, Pritam, Ritvik, Shivam, Shubham, Vinay, Jay. Attentively present यस। है कि बस bodily present and mentally absent? Present, right? Jay. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Okay. So आज हम देखेंगे, today we'll see that the second shloka of Shikshastakam. Okay. So in last session we have discussed, last 7 sessions we have discussed seven. Okay, seven effects of chanting Hare Krishna. So now we'll see the next shloka, that is Namna Makari Bahuda निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशम इहाजनिनानुरागः. So what Lord Chaitanya Mahaprabhu is saying in this shloka? So नाम नाम अकारी बहुधा means भगवान के बहुत सारे नाम है. God has many names. Okay. And Nija Sarva Shakti means he has invested his whole potency in his name. भगवान ने अपनी पूरी शक्ति उनके नाम में डाल दी है. Then Tatrarpita Niyamita Smarinena Kala means when you there is no time, place, or any rules for chanting Hare Krishna Mahamantra. You can chant Hare Krishna Mahamantra at any time, at any place, because the mantra itself is so pure, so potent that it will purify you. Then Durdaiva Midrishim Ihajani Nanuragaha. तो कृष्ण भगवान जो है, कृष्ण भगवान खुद अवतार लेके आए हैं चैतन्य महाप्रभु का कलयुग में. एंड नाउ ही इज सेइंग दैट आई एम सो अनफॉर्चुनेट, सो मिसफॉर्चुनेट दैट मुझे भगवान के नाम में टेस्ट नहीं आ रहा है. आई एम नॉट फीलिंग द टेस्ट इन चैंटिंग हरे कृष्णा. सो व्हाई कृष्ण भगवान हिमसेल्फ इज सेइंग दिस थिंग इन द अवतार ऑफ चैतन्य महाप्रभु? So in Kali Yuga, Krishna Bhagwan has came as in the avatar of a devotee of Krishna. Okay, so that he can teach us how to chant sincerely and how to go back to Krishna again. So, um, so many religions are there, okay, and different religions like Christianity, Islam, and in our religion also, in Sanatan Dharma also, all these religions have given very important importance to sound vibration. Sound vibration को बहुत importance दिया है सब religion में. तो जैसे इसे इसे क्या बोलते हैं actually? This is called as sonic theology. Sonic theology. Just like Christianity में hymns and songs हैं. By singing the hymns and by songs, they remember God. Okay. And in Islam there is Quran, which is written in Arabic language. So the Arabic language, they say that it cannot be translated into any other normal language. So if you want to understand Quran, you have to learn Arabic, but it is very pure script in Arabic language. So many people are there who don't understand Arabic. Many Islam people don't understand Arabic, but still they read namaz every day, because they understood that even if I don't understand, but this sound vibration of reading this Quran of this namaz is very pure. So every religion has this what to say, given importance to sound vibration. And the same way in our religion also, we also pray, we also chant Hare Krishna. So now, from where does this sound when we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare? So when we chant this Hare Krishna Mahamantra, so from where does this sound get its energy, its potency? So that we'll discuss today. Very interesting, very deep subject matter. So please hear very attentively. Okay. So now there are two aspects in our scriptures. One is Varnavad and one is Potavad. I repeat again. One is Varnavad and one is Potavad. So what happens in Varnavad? Okay. So in Varnavad there was a great rishi in this aspect. His name was Gemini Rishi. I think you all might have heard his name. So Gemini Rishi, what he's saying, that pronunciation is more important of any mantra.
every mantra, whatever mantra is there, mantra will have its power, and that power comes from pronunciation. When you pronounce, जब आप अच्छे से उच्चारण करेंगे उस मंत्र का, then the mantra, that benefit will come to you. This is what is described in Varnavad. Just for example, like we have so many formulas in our physics, mathematics, chemistry, right? Just for example, I take E is equal to mc square. So this formula, so what he's trying to say over here is that just substitute some values in the formula and get the result. No need to understand how the formula came. वो formula कैसे derive हुआ था वो आपको समझने का जरूरत नहीं है. Just substitute the values and आपको उसका result मिल जाएगा. Okay. So this is what Varnavad philosophy is saying in our scriptures. Just for example, Lord Krishna, गोवर्धन पूजा के टाइम को कृष्ण भगवान ने मतलब पूजा किया so that Indra will do the rain. Okay. So even the demigods, Indra, Chandra, Varun, Durga Devi, Kali Devi, so all these demigods, they are also bound to these rituals. अगर आप rituals perfectly करेंगे, हवन perfectly करेंगे, perfect मंत्र का pronunciation करेंगे, तो they are bound to give the results. जैसे कि हिरण्यकशिपु हो गया, ठीक है. हिरण्यकशिपु, he was a demon, वो राक्षस था, पर उन्होंने तपस्या किया, ब्रह्मदेव का तपस्या किया, और इतना कठोर तपस्या किया कि ब्रह्मदेव को पता था कि he is a demon, but still he was bound to give him benediction. Okay, so this is how rituals are, even the demigods are bound to rituals. So this is what Krishna is teaching us from this incident. And then comes the incident of a Suta Goswami, जिन्होंने भागवतम narrate किया था. So Suta Goswami, so he was very expert in all the aspects of scriptures, but he was not that much well versed in the pronunciation. But this pronunciation is very least qualification. But Varnavad gives importance to pronunciation. Just like in India we see, अगर हम किसी ब्राह्मण को invite करेंगे and that Brahman is doing very nice हवन, बहुत अच्छे से पूजा कर रहा है, perfect pronunciation है उसका, then we all glorify that Brahman, वो बहुत अच्छा है. पर अगर कोई ब्राह्मण है जो उतना अच्छा pronounce नहीं कर पा रहा है, but he knows the meaning of the mantra, उसको मंत्र का मीनिंग पता है पर प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है, तो to that person we don't give that much importance. Okay, pronounce नहीं कर पा रहा है, but someone is pronunciating very nicely, उच्चारण अच्छे से कर रहा है पर उसको मीनिंग पता नहीं है, but still we give very much importance to that person. Okay, so what is happening here is, when we, this another concept called as Spotavad, like I said, right, Varnavad gives importance to pronunciation. Now comes Spotavad. Spotavad means, what happens Spotavad is, you first understand it, you understand the mantra or whatever you're reading, you understand it, and then in your consciousness, after understanding, then you realize it, and then you explain to others in such a way that they will also understand it. So this is called Spotavad. Just for example, a joke is there. अगर मैंने कोई joke बोला है, so unless you understand the joke, you will not laugh, है ना. Just joke बोल दिया, so it doesn't make any sense. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा लड़का अपने मम्मी से पूछ रहा था कि मम्मी मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि मुझे आपके परमिशन के बिना घर के बाहर में जा सकता हूँ जहाँ चाहे. तो उसकी मम्मी बोल रही है कि इतने बड़े तो आपके पिताजी भी नहीं हुए कि मेरा परमिशन के बिना वो कहीं जा सकते हैं. सो अनलेस यू अंडरस्टैंड दिस, you cannot laugh. Okay, so similarly like that, different puzzles are there. Unless we understand the puzzles in our consciousness, we cannot make it out. Okay, so there is Vedas and there is Puranas. So Vedas give more importance on pronunciation, and Puranas give more importance of understanding and then pronunciating it. पहले समझना है, फिर उसको उच्चारण करना है. तो अभी ये दो चीज तो हम समझ गए, ठीक है. अभी जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, इसके अंदर जो एनर्जी है, जो पावर, जो पोटेंसी है, वो कहाँ से आती है हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर. सो दिस, इज इट कमिंग फ्रॉम प्रोनाउंसिएशन और इज इट कमिंग फ्रॉम क्या बोलते हैं आपका अंडरस्टैंडिंग इट. कहाँ से आती है? कैन एनीवन से? शिवम. Now explain two aspects from the scriptures. So हरे कृष्ण मंत्र में उसका पोटेंसी कहाँ से आता है? प्रोनाउंसिएशन के वजह से या उसको समझने के वजह से?
Shivam, are you there? दोनों से गया। दोनों से. Okay. Who else can answer? Ritvik. समझ के प्रोनाउंसिएट करने से, आप बोल रहे pronunciation से. समझ के प्रोनाउंसिएट। समझ के pronunciation से. Okay. Who else can answer? Debajyoti. What do you think? Pronunciation. Only pronunciation. Okay. Okay. So I'll say it, no problem. So it actually comes in both the ways. Okay. Pronunciation also and understanding and pronunciation also. But more important than that is that Lord Krishna has invested his all potency in this mantra. Kali kale nama rupe Krishna avatar. तो कलयुग में कृष्ण भगवान उनके नाम के रूप में आए हैं. सो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. और चैतन्य महाप्रभु इज टीचिंग ओवर हियर. नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला. मीन्स भगवान ने अपना खुद का एनर्जी पूरा पोटेंसी डाल दिया है. मतलब हरे कृष्णा जो मंत्र है एंड कृष्ण भगवान, राम भगवान, राधा रानी, दे आर नॉन डिफरेंट, दे आर वन. ओके. So this is very very important that we need to understand over here. So now in भक्ति नो, जो भगवान की कृपा है ना, उससे हमारा प्रोग्रेस भक्ति में ज्यादा होता है. जैसे कि दामोदर लीला करके हुआ था. मैं पहले बार एक बार एमएमसी या फिर मैं एक रीइंकार्नेशन सेशन में बोला था आप सब लोग को कि कृष्ण भगवान कैसे एक मोटर से दो दो बड़े बड़े जो पेड़ थे उनको कृष्ण भगवान ने गिरा दिया था. राइट. सो तभी जो मोटर से उनको बांधा हुआ था, ठीक है, तो यशोदा मैया जब कृष्ण भगवान को बांध रही थी तो हर टाइम 2 उंगली रस्सी कम पड़ रही थी. एवरी टाइम 2 fingers रोप वॉज लेस. सो शी ट्राइड वेरी वेरी नाइसली उसको बांधने का कोशिश किया. देन कृष्ण भगवान ने देखा कि बहुत एंडेवरिंग अ लॉट, सो लेट मी गिव माई ब्लेसिंग टू हर एंड देन शी कैन टाई मी. तो इन दिस वे अपना खुद का एंडेवर और भगवान का कृपा. सो दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. ओके. You cannot progress in your spiritual life without these two aspects. First is you have to endeavor, आपको मेहनत करनी है, and then you have to depend on Krishna's mercy, and then you can progress in spiritual life. And this also applies to your material activities also. जैसे राधेनाथ स्वामी महाराज उनके एक बुक अनोखा सफर बुक में लिखते हैं कि वो वृंदावन में जब थे, वो वहाँ पर ऐसे ही जंगल में सो रहे थे. तो वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग बाबा जी भी थे. तो एक रमेश बाबा जी करके वहाँ पर थे. तो वो वहाँ पर उनके साथ ही सो रहे थे. तो उन्होंने हाथ में एक पॉइंटेड एक क्या बोलते स्टिक लिया है. स्टिक लेके सो रहे थे. तो राधानाथ शर्मा उनके बोल रहे कि आप ऐसे के लेके क्यों सो रहे हैं, भगवान तो कृष्ण भगवान तो है वृंदावन में, वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे. तो उन्होंने बोला कि कृष्ण भगवान प्रोटेक्ट यू, देर इज नो डाउट इन दैट, बट मैंने मेरी जिम्मेदारी भी निभाई है. I have also endeavored and I have also done my responsibility from my side to protect myself. Okay. This is what Krishna Bhagavan is teaching us. Endeavor plus mercy of Krishna. So as a student, आप लोग को ये समझना नहीं चाहिए कि मैं हरे कृष्ण चैंटिंग कर रहा हूँ, I'm attending the spiritual session, so Krishna will have mercy on me, I'll become an engineer very easily and get a job. Not like that. You have to endeavor. You endeavor, give your best, and then depend on Krishna for the result. So this is what we have to understand from these things. Okay. And now Durga Puja is coming. So like you see in Durga Devi ke haath mein trident, Trishul. Durga Devi has a trident. So whoever are rebellious of God in the spiritual world, Krishna, Ram, and all Vishnu, so भगवान वहां पर है. And whoever is rebellious of God, so for they come into the material world. And material world की in charge है Durga Devi. She has the Trishul in her hand. Okay. So we have done mischievous activities and all these things. So she is there to punish us with Tritap Klesh. Adi Devik, Adi Bhautik, and Adi Atmik Klesh. We get problems from our body, problems from the nature, problems from our surrounding.
So in this way, she teaches us that you have done some mischief and that's why you have come over here, but you have to go back to Krishna again, to your home. This is what Durga Devi is trying to teach us over here. So some, जैसे दुर्गा पूजा में बहुत सारा पंडाल रहता है. ओके, सो वी समटाइम्स व्हाट हैपन इज दैट, एक बार मैंने सुना था कि दे आर, आई वाज वॉकिंग बाय एंड देयर पीपल आर सेइंग, जो पुजारी है इज ग्लोरीफाइंग दुर्गा देवी वेरी नाइसली, दैट दुर्गा देवी यू आर द इंचार्ज ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, यू आर द illusionary energy of God, you are controlling us all, maintaining us all, and everything, and many things you are saying. But then came the punchline. Then came the punchline. Dhanam Dehi, Janam Dehi, Sundarim Dehi, this and that, all those things. So what is the meaning of that? Give me this, give me that, and all those things. So this thing is very very wrong. Many people do this thing. Durga Puja में फिल्मों के गाने लगा देते हैं and all those things. So Durga Devi doesn't come for hearing all these nonsense things. But लोग यही करते हैं दुर्गा पूजा में, फिल्मी गाने चलाएंगे and all those things, and ask material things. दुर्गा देवी क्या बिजनेसमैन थोड़ी है. वी आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस विद गॉड, डेमी गॉड्स, दैट मैं ये करूंगा, मैं ये हवन करूंगा तो मुझे ये दे दीजिएगा, मैं ये करूंगा तो मुझे वो दे दीजिएगा. दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू. तो मैं कल आप लोगों में से कुछ लोग को फोन किया था, तो मैं आपको ये बात बोल रहा था, राइट? आई थिंक मोहित, देवज्योति एंड ऋत्विक, आई थिंक आई स्पोक विद यू दिस थिंग दैट जब सीता मैया ने जब फर्स्ट टाइम राम भगवान को देखा था इन इन दी क्या बोलते हैं, नेपाल में उनका जब घर स्वयंवर होने वाला था वहां पर, तो फर्स्ट टाइम सीता मैया ने पुष्प वाटिका या सम वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर गार्डन में उन्होंने कृष्ण राम भगवान को पहली बार देखा, सीता मैया ने. एंड देन जैसे उन्होंने देखा, उनके मन में ये हो गया कि कृष्ण भगवान, सॉरी राम भगवान है, मुझे इन्हीं से शादी करनी है. उन्होंने मेरा दिल जीत लिया. सो दिस इज कॉल्ड एज लव एट फर्स्ट साइट. ओके, नॉट लाइक द फिल्म्स एंड ऑल, जिसमें होता है ना, किसी लड़की को देख लिया, लव एट फर्स्ट साइट हो गया. सो दैट इज नॉट लव, दैट इज लस्ट. दैट हाउ कैन आई एंजॉय दैट गर्ल और हाउ कैन आई एंजॉय दैट बॉय, दिस इज लस्ट. बट लव मीन्स how can I serve that person without any expectations, unconditional service. That is called love. That is transcendental love. So now coming back to the point, so जब वहां पर क्या बोलते हैं, सीता मैया ने देखा, तो सीता मैया गई उमा देवी के मंदिर में. उमा देवी इज ए डेमी गॉड. तो उमा देवी के मंदिर में आके वहां पर इंटेंसली प्रे कर रही है उमा देवी से कि उमा देवी प्लीज हैव मर्सी ऑन मी, प्लीज ब्लेस मी, दैट मेरे स्वयंवर में यही इंसान आए जिनको मैंने आज ये वाटिका में देखा है, तो यही इंसान है और मैं इन्हीं को वरमाला पहनाऊंगी और किसी को वरमाला नहीं पहनाऊंगी. सो शी इज प्रेइंग इंटेंसली. सो हाउ इज दिस पॉसिबल कि वो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है एंड देन शी इज प्रेइंग टू डेमी गॉड्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड. सो कैन एनीवन आंसर except Debajyoti, Mohit and Ritvik? So how is it possible that someone from spiritual world is praying to demigods of material world? Rupam, can you answer? Are you there, Rupam? Yes, bhai. Okay. So what do you think? क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर सकते हो, समझ में नहीं है. समझ में ऑलरेडी लेट हो गया है. शुभम, कैन यू आंसर? I don't know the answer. Attentive नहीं है रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? शुभम, भैया I don't know the answer भैया. I don't know the answer. don't know. ये आंसर नहीं. क्या कर रहे हैं सेशन में? Who can answer? प्रीतम. भैया क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर सकते हो? लॉन्ग क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन, आई एम कमिंग टू द पॉइंट. ओके, कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सीता मैया जो है वो उमा देवी हु इज अ डेमी गॉड का को प्रे कर रही है कि मुझे राम ही चाहिए मेरे हस्बैंड के रूप में. सो व्हाई इज दिस हैपनिंग? समवन फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, but they are praying to the people of material world, the demigods, who are conditioned in birth and death.
So ऐसे क्यों हो रहा है? जय सरकार, जय, आर यू देयर? ओके, आप लोग को समझ में आया क्वेश्चन रूपम, प्रीतम? हाँ ओके, एनी लास्ट की वजह गेस, से एनीवन? लास्ट की वजह से हाँ, लास्ट की वजह से अरे स्पिरिचुअल में तो लस्ट है लास्ट ही नहीं, मैं वही तो बोला आपको। स्पिरिचुअल वर्ल्ड हैज ओनली लव, देयर इज नो लस्ट बिटवीन सीता मैया एंड राम भगवान और राधा एंड कृष्णा, दैट इज प्योर लव, दैट इज नॉट लस्ट। ओके, कमिंग कमिंग मैं ही बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखने को मिलता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दैट very means important thing that we have to respect all the demigods. सीता मैम को यहाँ पर क्या सिखा रही है कि you respect all the demigods, इंद्र, चंद्र, वरुण, दुर्गा देवी, काली देवी, शिव जी, everyone, you respect everyone. Okay, that is the first teaching. Now second teaching is more important, what she is trying to teach us over here. Second teaching, Sita Maya is going and praying to Uma Devi that I want this person as my husband because I love this person. So in the same way, when you go to demigods, for instance, now Durga Puja is going. So when you pray to Durga Ma, when you pray to Durga Devi, you should not pray like a business deal. कि मुझे एग्जाम में पास करा दो, मुझे जॉब दिला दो, मुझे प्रॉपर्टी दिला दो, ये दिला दो, वो नॉट लाइक दैट. You should pray to Durga Devi that please give me have mercy on me, मुझे आशीर्वाद दीजिए, give me some blessings so that I can develop love and devotion for Krishna. I can chant Hare Krishna more sincerely, and because of that, all the demons inside me will get destroyed, and then I can get purified and I can go back to Krishna. If you do this thing, then Durga Devi will be very happy that this is a real devotee. Durga Devi appreciates Krishna's devotee more, that this is the real devotee, because Krishna is the master of Durga Devi also. Krishna is master of all of us. So she will become more happy and she will bless us. And then your chanting will improve, you can chant more sincerely and you can go back to Krishna in this lifetime only. So this is the teaching Sita Mai हमको यहाँ से पता रही है. Lord Shiva is the greatest Vaishnava and Durga Devi is the greatest Vaishnavi. Okay, they're very close to Krishna, very dear to Krishna. So when you get their blessings, with their blessings you can go back to Krishna. This is how you have to pray to demigods. दुर्गा पूजा में ऐसे प्रे करना है, ना कि फिल्मी गाने बजा के ये धनम देही, सुंदरीम देही, लड़की दे दो मुझे, पैसा दे दो मुझे, प्रॉपर्टी दो मुझे, नॉट लाइक दैट. ओके, सो दिस इज द मोस्ट बिगेस्ट मिस्टेक ऑल द पीपल डू. सो दिस माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अभी दुर्गा पूजा का फेस्टिवल चल रहा है, सो ऑल ऑफ अस शुड सिंसियरली चैंट हरे कृष्णा, ओके, एंड प्रे टू दुर्गा देवी फॉर दिस ओनली, टू so that you can develop love and devotion in your heart for Krishna. Understood? आप लोग को समझ में आया ये बात? प्रीतम, शिवम, रूपम, शुभम, yes, no? यस Okay, ठीक है. So this is how you have to pray. So now we'll chant Hare Krishna very sincerely. Okay, we have less time, so we'll just chant 2 rounds sincerely with whole devotional attitude. So everybody please be there. Your second attendance will be after completing 2 rounds. I'll do some special announcement at that time. Okay, so please chant sincerely, all of us. Okay, so I request everyone please unmute and we'll start chanting. Okay, everyone please unmute. Jai, Debajyoti, Mohit, Pritam, Ritvik, Rupam, Shivam, Vinay. Please unmute everyone. Sincerely we'll chant. We have to just chant and hear. Okay, chant and hear attentively. ठीक है? जय श्री कृष्ण चैतन्य. जय श्री कृष्ण चैतन्य. We have all completed 1 round of chanting Hare Krishna now. Okay. So I hope all of you also completed. Now we'll start the second round. So मैं request आप सब लोगों से ऋत्विक, रूपम, शिवम, विनय, जय सरकार, please unmute yourself. बहुत ही ध्यान पूर्वक, full focused attention and attentively we'll chant Hare Krishna. Durga Devi will be very happy. She will bless all of us.
please take the advantage, take it seriously. Okay, so we'll start the second round now. So Shivam, Ritvik, Jai Sarkar, Vinay, please unmute yourself. Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Advaita Gadadhar, Srivas Adi Gaur Bhakta Vrinda. Srivasadi Gaur Bhaktavinda. Together we'll chant, okay? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. All of you have completed your second round also. Okay, so very nice. So one quick announcement. So first of all, आप लोगों को कैसे लगा chanting करके 2 rounds? How did you feel after chanting 2 rounds? Fresh. Okay, very nice. So now one quick announcement I will do. We have just 4 minutes left with us. So this from today onwards there is a camp starting. You know it, right? A special camp is starting from today onwards. So I am sharing my screen so you all can see this. So this is the camp that yatra which will start from today onwards. You all are able to see my screen, right? चलो मेरा screen देख पा रहे हैं? Yes, bhai. Okay, so this is the camp Chitrakoot and Prayagraj Yatra. This is a complete virtual tour. So every year in Durga Puja holidays, we all go to different holy places like Tirupati, Kanchipuram, Vrindavan, Jagannath Puri, and all these holy places for 1 week or so. But this time because of lockdown, हम लोग जा नहीं पा रहे हैं. So all your senior, your coordinators and all the senior batches, so all of them are attending this special tour. So this time we will be going to Chitrakoot and Prayagraj. So this time this tour will be completely virtual tour. It will be very beautiful audio visual tour. We'll take you to the holy places there. So it will start from today till 26th of October. And all these holy places we'll be visiting. Prayagraj we will visit, Srila Prabhupada initiation place, Bindu Madhav temple, ISKCON Prayagraj temple, Chitrakoot Ram Ghat. So Ram and Sita, they have done many pastimes in Chitrakoot. In this place, very holy place. So we'll go there. Beautiful Mandakani river. So it will be very beautiful, and it will be audio visual tour, very wonderful tour. So I have sent you all the registration forms for this. So you all also can register and take advantage of this tour. So Mother Durga will be very pleased when you take the advantage, when you chant Hare Krishna. Okay, so this is a very beautiful tour. Special attractions will be there. We'll be giving gifts for all the participants also. A real outing experience, and we'll get the same spiritual credit as we go physically to the holy dham. Okay, जो हमको कृपा, जो पुण्य हमको मिलता है होली धाम में जाके, वो same credit we'll get by this also, because we take the darshan of the Lord by hearing about the Lord. Okay, so बहुत सारे जगहों का दर्शन मिलेगा, बहुत अच्छा पास टाइम सुनने को मिलेगा. So it's my request to all of you that please do not miss this tour. So you are having all holidays, so please take advantage of these holidays. Okay, so this is one of the important announcement. And then one more thing, आप सब लोगों का Sunday को very beautiful session on creation. Okay, ये पूरा जो हमारा अर्थ प्लैनेट है, यूनिवर्स कैसे क्रिएट किया गया, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, और द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड क्या हमारा अर्थ एक ही प्लैनेट है, क्या वहाँ पर और भी अलग universes are there? There are multiverses. There are different universe, and how are they all existing at the same time, and how it is being controlled, how it is being managed, उसका mechanism क्या है? So it is very interesting session creation. So Sunday को 10:30, so please do not miss that. And today is the last day of your quiz. Okay, तो आप सब लोग का छुट्टी है. So मैंने आपको quiz का link भी send कर दिया है, quiz का videos भी send कर दिया है. And also I have sent you the course material for the quiz also. So just one click away. Take some time, 20 minutes, think nicely, find the answers from the course material, and you will easily pass the quiz. Okay, so please do these things very sincerely. And today evening 7:30 p.m. will be the first session of this wonderful yatra. So you all can attend this yatra. I'll send you the links. So please do register for this also. Okay. Any doubts, any questions, anyone?
Rupam, you have any question? No. Okay. ऋत्विक, जय सरकार, शिवम, आप लोग प्रेजेंट है क्लास में? हाँ आप लोग अनम्यूट नहीं किए चैंटिंग करने के टाइम को? नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे चैंटिंग कर रहे हैं। ओके, जय सरकार, आर यू देयर और यू स्लीपिंग? Okay, no issues. So we'll meet today evening 7:30 and then on Sunday 10:30. Okay, so this will happen. I've mentioned the schedule also in the registration form. So every day evening 7:30 it will happen from today onwards to 26th, that is Monday, and every day morning 10:30. Okay, so please take advantage of this, because this Hare Krishna Mahamantra is our ticket going back to the spiritual world, and Durga Devi is the in charge of the material world. She is the gatekeeper with the trident in her hand, Trishul in her hand. She will check the ticket before you get out of the material world, whether you have the ticket to go spiritual world or not. So please chant very, very sincerely and take blessings of Durga Devi, okay, and Krishna, and we can happily go back to the spiritual world. Okay? Okay then, Hare Krishna all of you. Hare Krishna. We will meet today evening, huh? Hare Krishna, bhaiya. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna.